समय उपग्रह की गति करीब 7.58 किलोमीटर होगी। Today's flight is the 48th flight of the Polar Satellite Launch Vehicle. This also happens to be the 36th launch of PSLV from our first launch pad. The remaining 12 launches of PSLV have happened from our second launch pad. This is the 72nd mission from launch vehicle mission from Sriharikota. PSLV is the workhorse of ISRO, and its 45 successful launches are a testimony of its robust world-class design. In these missions of PSLV, we have undertaken missions like polar orbit missions, other low Earth orbit missions, GTO and sub-GTO missions. It is the PSLV which has taken us to Mars as well as to Moon, and we are poised for many more challenges in the future. We have 4 variants of PSLV in terms of usage of strap-ons, and they are the PSLV XL with 6 strap-ons. On your screens, a view of the base portion of PSLV on the launch pad. You can see the small long shot of PSLV standing majestically on the launch pad. In the background, you can see the mobile service tower, which has been moved away. And now back to the mission control. Minus 25 minutes. Where you can see the scientists involved in monitoring the launch, all of them on their computers, monitoring the launch. In the background, our VVIP gallery, where our esteemed guests are witnessing the launch. And as I was saying, out of the 4 variants, we have PSLV XL. Mission Director Sri SR Biju on your screen. He has to authorize the launch after a few minutes, and we will show you that event also as and when it happens. Then we have PSLV with 4 strap-ons called PSLV DL, and PSLV with 2 strap-ons called PSLV with 2 strap-ons called DL, and with 4 strap-ons QL. And today we are flying the core alone version as per the mission requirement. This is without any strap-ons. PSLV के जो वेरिएंट्स हैं उसमें ये कोर एलोन है, इसमें कि स्ट्रैप ऑन का कोई जोड़े नहीं जाते हैं। और हमारे जो और दूसरे वेरिएंट हैं उनमें 2 स्ट्रैप ऑन एक्सल मोटर्स। उसके इस समय आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये कोर एलोन रॉकेट का जो चित्र दिखाया जा रहा है। इसके जो साइड्स में जो रॉकेट लगे हुए हैं वो उसमें 2 RCT हैं और 2 SITVC के टैंक्स हैं जो कि रॉकेट को पिच डाउन या कंट्रोल करने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। इस समय आपके Now we bring to you a short film on the integration of PSLV C46 mission. Here you can see the flag off of the core base shroud and nozzle end segment of PS1. SHAR Director Shri Pandian has just flagged it off, and it has been brought to the launch pad on the moving trailer. इस समय आप नाजिल एंड सेगमेंट जो कि प्रथम चरण के रॉकेट का एक
चरण एक Noted. कक्ष है, उसको हम क्रेन के द्वारा लॉन्च पेडेस्टल पर रखने जा रहे हैं। जो आप नीचे पोर्शन देख रहे हैं ये उसकी नोजल है, अब उसको लॉन्च वेल में धीमे धीमे लोअर कर रहे हैं। इसके उपरांत इसको ऊपर करने के बाद में हम दूसरा सेगमेंट जो कि इसके से जोड़ेंगे, उसका चित्रण अभी आपके सामने प्रस्तुत होगा। ये दूसरा सेगमेंट है जो कि मिडिल सेगमेंट 1 कहलाता है, और इन दोनों सेगमेंट को टंग ऑन ग्रूव जॉइंट के द्वारा इनका समाकलन किया जाएगा। इसमें PC10 की कोटिंग उस पर दी जा रही है। अब आप देख रहे हैं इसका MS सेगमेंट 2, जिसको कि हमने अपने क्रेन के द्वारा ऊपर लिया है, और इस तरह से जोड़ने के बाद में प्रथम चरण तैयार हो गया है। उसके बाद में इसके साइड में हमने 2 डमी सिलेंडर्स और 2 RCT रॉकेट्स का समाकलन किया है। इस समय जो आप चित्र देख रहे हैं ये द्वितीय चरण का C46 का रॉकेट है, जिसको कि टेलर के द्वारा लेके लॉन्च पैड पे ला रहे हैं, और लॉन्च पैड पे लगे हुए क्रेन की सहायता से इसको हम वर्टिकल करेंगे। इस समय आप देख रहे हैं इसको धीमे धीमे करीब 45 डिग्री तक वर्टिकल कर दिया गया है। अब ये एकदम सीधा ऊर्ध्वाधर हो गया है, और इसको हम लिफ्ट करके प्रथम चरण के साथ में इसका हम समाकलन करेंगे। अब आप देख रहे हैं ये सेकंड तरह का नोजल है, जो कि ±5 डिग्रीज अपने दाएं और बाएं तरफ इसका स्टीयरिंग कर सकते हैं। ये तीसरे चरण का रॉकेट को चौथे चरण के रॉकेट के साथ में समाकलन किया जा रहा है। इस समय चौथे चरण के रॉकेट को हम धीमे धीमे क्रेन के द्वारा नीचे उतार रहे हैं, और हम इन दोनों PS3 और PS4 का समाकलन करने के बाद में इसको हम एक टैंक के अंदर में समाकलित करेंगे। फिर ये पूरा PS3 PS4 का जो एक चरण है उसको हम टेलर के द्वारा लॉन्च पैड की तरफ लेके जाएंगे। इस समय आप जो देख रहे हैं ये PS3 PS4 का समाकलित रॉकेट, अब हम थर्ड चरण के द्वितीय चरण के ऊपर में इसका हम समाकलन करेंगे। और सब समाकलन के बाद में इस समय का जो हमको व्यू दिखा रहे हैं, सैटेलाइट ऑलरेडी समाकलित हो गई है, और हम ऊष्मा कवच को भी क्लोज कर चुके हैं। इस तरह से ये रॉकेट पूरी तरह तैयार हो गया है। अब ये पूरा तैयार रॉकेट अब आपके समक्ष चित्र में दिखाया जा रहा है। अब जिस MST यानी के अंदर मैंने को समाकलन किया था, अब उसको लॉन्च की उल्टी गिनती के अनुसार उसको हम वापस लेके जा रहे हैं। Welcome back to the live coverage. On your screens in the center, Chairman ISRO Dr. K. Shivan, flanked by SDSC SHAR Director Sri Pandian and VSSC Director Sri Somanath. Now a view of the LCC where the mission is being monitored. -20 minutes. Request all A stations long change shot over of to channel PSLV on 2. the launch pad. It's a very early morning here. The sun is yet to rise, and we started this launch campaign of C46 inside the mobile service tower, which you saw just moved away on the 25th of March 2019, with the stacking of core base shroud and nozzle and segment as shown by us. The vehicle was step-by-step integrated with the support of various stage and satellite preparation facilities, and now after 57 days of launch campaign, you can see the PSLV-C46 majestically on the launch pad, undergoing final checks before its stated launch at 5:30 a.m. IST. That's about 20 minutes from now. इस समय आपके सामने जो चित्र दिख रहा है उसमें 2 SITVC के टैंक्स हैं, उनके नीचे RCT रॉकेट भी है। ये जो चित्र आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है ये FCC यानी जहां से कि हम द्रव्य नोदन को रॉकेट में भरते हैं, और इस समय सारे वरिष्ठ गण तैयार हो रहे हैं अपने अपने सिस्टम के चेकआउट देखने के लिए। ये हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री वीजू जी हैं, जिनको कि अभी इस लॉन्च के लिए ऑथराइजेशन करना है, वो अपने समय का इंतजार कर रहे हैं। उनके साथ में हमारे शार सेंटर के AD श्री मोती साहब हैं, मोती जी हैं, और ये FCC का दृश्य है जहाँ से कि सेकंड और चतुर्थ चरण में द्रव्य नोदन भरा गया था। ये हमारे रेंज ऑप्शन डायरेक्टर श्री पुंगिनन साहब हैं, उनके बगल में डिप्टी डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं। PS2 stage team to vehicle director. All stage parameters are normal. PS2 Now, stage is clear let for me talk to you PSLV about the 46 mission. launch authorization process, where the mission director will authorize the launch in about 2 minutes from now.
The final countdown for the PSLV-C46 mission started at 4:30 a.m. IST yesterday, that is 25 hours before the liftoff. The countdown was initiated following the clearances given by the Mission Readiness Review and the Launch Authorization Board. The authorization of the launch is given after reviewing the readiness of vehicles, satellites, ground station, and other range support systems. In the early stages of this countdown, the propellant filling of the fourth stage was done, and subsequently the second stage of rocket has been filled. Now, taking T as the liftoff time, at T minus 16 minutes, that is about 1.5 minutes from now, the mission director will authorize the launch to the vehicle director. This authorization is based on the readiness of vehicle systems, satellite, range and ground systems. On the screen, Sri Biju, ready with the authorization. Then at T minus 15 minutes 30 seconds, the vehicle director, Sri Srikant, will authorize the initiation of automatic launch sequence, the ALS. ALS is then initiated at T minus 14 minutes 30 seconds. From this event onwards, checkout of all the vehicles and satellite related activities are taken care by the onboard computer residing on the launch vehicle. On the screens, Sri SR Biju taking the inputs from various subsystem directors before he authorizes the launch. प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री बीजू अपने सहयोगियों के साथ में सभी सिस्टम्स की रेडीनेस का रिव्यू कर रहे हैं. सबका रेडीनेस होने के बाद अपने ऑथराइजेशन देंगे. इस समय उनको करीब करीब सभी केंद्रों से उनको रेडीनेस का ग्रीन सिग्नल मिल गया है. अब हम समय का इंतजार कर रहे हैं. Range and ISRO network stations and prevailing favorable weather conditions, Mission Director hereby authorizes to initiate launch operation sequence for the launch of PSLV-C46 RISAT-2B mission at 5:30 hours IST today, that is 22nd of May 2019. The mission director has authorized the launch, and now we await the vehicle director's authorization of the launch, which is going to happen in few seconds from now. अब मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये 15 मिनट में क्या क्या इवेंट होंगे जिसके द्वारा ये उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में छोड़ा जाएगा. 0 से 2.8 सेकंड पहले ओबीसी के द्वारा रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर्स जो कि रॉकेट की दोनों तरफ लगे हुए हैं उनको इग्नाइट कराया जाता है. इन दोनों आरसीटी के प्रज्वलन की प्रक्रिया देखने के बाद में ही ऑन बोर्ड कंप्यूटर T-0 यानी 0 समय पे प्रथम चरण को इग्नाइट करवाते हैं. इसके परिणाम से 44.4 मीटर लंबाई वाला रॉकेट जिसका कि वजन 230 टन है वो धीमे धीमे अपने गंतव्य स्थान की ओर जाएगा. जब प्रथम चरण जो कि करीब 1 मिनट और 50 सेकंड के बाद तक प्रज्वलित होता है और रॉकेट को करीब करीब 51 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा देता है और रॉकेट को 1.594 किलोमीटर पर सेकंड की गति प्रदान करता है. उसी समय प्रथम चरण के मुख्य रॉकेट को अलग करके द्वितीय चरण के इंजन को प्रज्वलित करते हैं जो कि करीब करीब 150 सेकंड तक चलता है और रॉकेट वेग को करीब 4.3 किलोमीटर पर सेकंड और 188 किलोमीटर की अल्टीट्यूड तक पहुंचाता है. इसी दौरान वो वातावरण से बाहर निकलता है. उस समय अपने ऊष्मा कवच को अपने से पृथक कर देता है. ये प्रक्रिया करीब 113 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है. On your screens, the PSLV once more, a close-up of the base region, a close-up of the launch pedestal. उसके बाद तीसरे चरण के प्रणों से रॉकेट को प्रज्वलन करने के पहले दूसरे चरण के इंजन को बंद करके उसको पृथक कर दिया जाता है. तीसरा चरण जो कि करीब 4 मिनट 27.60 सेकंड पर इग्नाइट कराते हैं वो रॉकेट की गति को करीब 4.3 किलोमीटर से बढ़ाकर 6.94 किलोमीटर तक पहुंचाता है. उस समय तक तृतीय चरण को मुख्य रॉकेट और किसी प्रवृत्त के बिना कोस्टिंग करवाते हैं और 9 मिनट 34 सेकंड पर चतुर्थ चरण को इग्नाइट करके इस रॉकेट को करीब करीब 558 किलोमीटर की अल्टीट्यूड पहुंच जाता है. उस समय उसकी अब स्क्रीन पे देखिए. Now we bring to you a short film made by the Developmental and Educational Communication Unit DECU of ISRO. Here is the video.
first Indian radar imaging satellite was launched in 2009. Subsequently, RISAT-1, another radar imaging satellite. rocket will follow today. At liftoff, with the timeline as t is equal to 0 seconds, the solid first stage gets ignited on ground. The first stage takes the vehicle to a height of about 52 kilometers, and the inertial velocity at this point is 1.6 kilometers per second. The separation of first stage takes place at 110.6 seconds from liftoff. The second stage is ignited at 110.8 seconds from liftoff. 5 seconds later, that is at 115.8 seconds, the closed loop guidance is started for PSLV for the precise path to its final orbit. That is, here onwards, the vehicle continuously compares its current state with the targeted end conditions and follows the commanded path to achieve them. The heat shield separation takes place during the second stage of flight at an altitude of 113.5 kilometers. The flight time is 177.6 seconds, and at this time, the initial velocity is 2.25 kilometers per second. The second stage takes the vehicle to an altitude of 188.7 kilometers before being commanded to shut off by the vehicle's guidance system. The flight time by now is 262.4 seconds, and the velocity at PS2 separation is 4.3 kilometers per second. The third stage is ignited at 263.6 seconds after liftoff, which is about 1.2 seconds after the second stage separation. PS3 burns for about 120 seconds, and that is about 383 seconds of flight time. By the time third stage separates, at about 563.7 seconds flight time, the vehicle is at an altitude of 438.5 kilometers. About 10 seconds after PS3 separation, the PS4 is ignited at 574 seconds flight time. The velocity at PS3 separation is 6.94 kilometers per second. From the timings mentioned, you will notice that there is an intentional coasting of about 190 seconds between the PS3 burnout and PS4 stage ignition. This is a non-thrusting phase of the rocket needed to reach the appropriate conditions at PS4 ignition. So finally, the PS4 stage is ignited at 574.1 seconds and commanded to shut off about 882.4 seconds from liftoff when the required initial velocity of 7.6 kilometers of orbit is achieved. Hence, in this mission, PS4 burns for about 308.3 seconds. PS4 gives a precise orbit to the satellite by its cutoff commanded from the vehicle guidance.
At this stage, the required circular orbit of 557 km circular Minus with 37.01 degrees inclination is achieved, and 47 seconds later, after PS4 cutoff at 9:29.4 seconds, that is 15 minutes into the launch, Power supplies are withdrawn. the RISAT-2B will be injected into orbit. We will show the live injection of RISAT-2B from our onboard cameras. जैसा कि अभी हमारे सहयोगी आपको बता रहे थे, उपग्रह प्रक्षेपण करने के लिए करीब 15 मिनट 29.42 सेकंड पर RISAT-2B को पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपण कर दिया जाएगा। ये यहाँ बताना चाहूँगा कि जो प्रथम स्टेज का रॉकेट है, इसमें ये सॉलिड रॉकेट है, इसमें 139 टन का On your screens, the prevalent weather here, you can see that it is very early in the morning. The sun is going to rise. The redness of the sky and the calmness here in terms of wind speeds are all visible. The weather at the launch pad has been very clear and very favorable. The important factors when it comes to weather are the one related to the wind speeds on ground and in flight, and of course any lightning activities that may prevail. Today it has been a very pleasant day, quite early in the morning, and the ground wind speeds are very benign. They are about less than 5 to 7 meters per second, where PSLV is designed to withstand ground speeds up to 20 meters per second. The upper altitude winds also are favorable, which means not much change from the earlier flight conditions. We always design the rocket trajectory with measured winds, and thus the smaller wind variability, that means that not much change from the design trajectory. जैसा कि इस समय सूर्योदय हो चुका है और आकाश में लालिमा छा रही है, और यहाँ पर हवा की गति सरफेस विंड जिसको कि हम कहते हैं वो 507 मीटर पर सेकंड के आसपास है, और जो ऊपर की विंड है जो कि 18 किलोमीटर पे है वो 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से है। ये रॉकेट प्रक्षेपण के लिए बहुत ही विनाइन कंडीशन है। इस समय आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हैं C46 PSLV का कोर एलोन रॉकेट अपनी उम्बिलिकल टावर के साथ में खड़ा हुआ है, और ये एक लॉन्ग शॉट में आप देख रहे हैं जो हमारे लॉन्च कंट्रोल सेंटर और मिशन कंट्रोल सेंटर, उनका एक चित्र आपको दिखाया जा रहा है। इस समय हम 3 मिनट और 28 सेकेंड दूर हैं अपने लॉन्च से। ये एक विहंगम दृश्य आपको दिख रहा है जो कि PSLV C46 अपने उम्बिलिकल तारों के साथ में और फीड लाइन के साथ में उम्बिलिकल टावर से जुड़ा हुआ है। इस समय जो आप उम्बिलिकल देख रहे हैं, उम्बिलिकल टावर, इसमें जो पाइपलाइंस होती हैं जिससे कि हम द्वितीय चरण और चतुर्थ चरण में द्रव नोदन को भरते हैं। चतुर्थ चरण के द्रव नोदन में MON3 और MMH, और द्वितीय चरण में हम US-25 और N2O4 को भरते हैं, जो कि द्वितीय चरण में ये करीब 41 टन भरा जाता है और चतुर्थ चरण में ये 1.6 टन भरा जाता है। और प्रथम चरण का जो सॉलिड रॉकेट है वो करीब 139 टन का है, और तृतीय चरण का रॉकेट में ठोस नोदक 7.65 टन का है। ये दृश्य जो आपकी स्क्रीन के ऊपर में आ रहा है ये मिशन नियंत्रण केंद्र का था, और इस समय हम आपको लॉन्च पेडिस्टल को दिखा रहे हैं। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे कि समय से 2.8 सेकंड पहले, यानी T-2.8 सेकंड पहले, इसमें लगे हुए 2 जो RCT रॉकेट हैं उनका प्रज्वलन होगा। जब वो प्रज्वलन जो हमारा ऑन बोर्ड कंप्यूटर इसको सेंस करने के बाद में T-0 यानी कि 0 के समय में प्रथम चरण को प्रज्वलित करेगा। A view of launch control. On your screens, in the center, Dr. K. Shivan, Chairman ISRO, flanked on the left of the screen by Sri Somanath, Director VSSC, and on the right of the screen by Sri Pandian. A view of the screen of the MCC, where you can see the multiple screens in which various flight parameters are being displayed. The green band is showing the clearances by the automatic launch sequence as per the timings, and the red ones are the events which are yet to happen. As and when the event happens in about 1 minute and 20 seconds from liftoff, one by one all these reds will go green. Mission Director Sri SRVG on your screens, very close to the launch, and the excitement of the launch slowly building up here.
just a minute to go for the launch. इस समय हम 1 मिनट दूर हैं, जिसको कि हम Minus T 1 minute. -1 मिनट कहते हैं। उस समय रॉकेट का प्रज्वलन Minus होगा 55 और seconds. फिर ये रॉकेट के प्रज्वलन के द्वारा 230 टन Minus और 50 seconds. 44.4 मीटर ऊंचाई वाला रॉकेट धीमे धीमे अपने गंतव्य की ओर बढ़ेगा। Minus 45 इस seconds. समय हम 45 सेकंड दूर हैं। अगर आप ध्यान से देखते रहिए टीवी की स्क्रीन के Minus ऊपर में 40 seconds. कि 0 से 2.8 सेकंड पहले 2 RCT रॉकेट Minus प्रज्वलित किए 33 जाएंगे, seconds. जिनके कंफर्म होने के बाद ही प्रथम चरण को प्रज्वलित किया Minus जाएगा। 30 इस seconds. समय हम 30 सेकंड दूर हैं अपने T0 से Minus 25 और seconds. हमारा प्रोग्रामर बराबर काउंटडाउन देते जा रहे हैं। इस समय हम Minus 20 20 सेकंड दूर seconds. हैं। Minus 15 Just seconds. sit back and see the launch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. इस समय रॉकेट प्रज्वलित हो गया है और अपने गंतव्य की ओर धीमे धीमे उठ रहा है। इस Plus रॉकेट 5 की seconds. 230 टन वजन वाला यह रॉकेट अपने गंतव्य की ओर जा रहा है। A perfect liftoff from the launch pad. On your screens, the early morning launch gives you a beautiful view of the flame of the exhaust of PS1 climbing into the atmosphere slowly, steadily on towards its path, towards its final orbit. इस समय हमारे स्क्रीन पे जो फ्लाइट पैरामीटर्स दिखाए जा रहे हैं, जो प्रेडिक्शन किया गया है और जो एक्चुअल आ रहे हैं, वो एक दूसरे के ऊपर ही चल रहे हैं। Can you hear the roar? Can you hear the roar of the vehicle? इस समय रॉकेट से निकलने वाली जो आवाज है उस समय वायुमंडल को गुंजित कर रही है और जो लोग बाहर से देख रहे होंगे आपको भी वो आवाज आपके टीवी स्क्रीन पर आ रही होगी। और हम इस समय 1 मिनट के आसपास पहुंच रहे हैं। Plus 1 minute. PS1 thrusting with its full power. This stage is about 20 meters in height and PS1 has developed a peak thrust of 4,800 kilonewtons. This will burn for about 105 seconds and it has a specific impulse of 270 seconds. The stage burns out at the altitude of 52 kilometers. We are now at the altitude of 27 kilometers. इस समय हम 1 मिनट और करीब 30 सेकंड तक चल चुके हैं और ये प्रथम चरण का जो रॉकेट से निकलने वाला प्रणोद इसको धीमे धीमे ऊपर की ओर लेते जा रहा है और इसकी गति बढ़ती चली जा रही है। इस रॉकेट का प्रचलन करीब करीब 110 सेकंड तक का रहता है। अब हम लोग करीब 90 सेकंड से You will ऊपर। see the burnout of PS1 shortly. You can see the PS1 has burnt out and the इस ignition समय of आप देख PS सकते हैं वीडियो में आपका PS1 और PS2 का पृथक हो गया है और a beautiful view of the separated bodies. You can Plus see 2 minutes. first stage falling away and the second stage ignited and moving forward. आपके स्क्रीन पे इस समय 2 डॉट दिख रहे हैं जिसमें कि एक फॉरवर्ड रॉकेट जो कि सेकंड स्टेज पे जा रहा है और जो कि प्रथम चरण का रॉकेट का इंजन एकदम नोजल एकदम रेड हॉट हो जाता है, इसलिए आप 2 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट देख रहे थे। और सेकंड स्टेज का से निकलने वाला प्रणोद इस रॉकेट को और अपने गंतव्य की ओर लेता जा रहा है और इसकी वेलोसिटी समय के अनुसार बढ़ती जा रही है। इस समय इसकी वेलोसिटी करीब 1.66 किलोमीटर पर सेकंड है और ये करीब 80 किलोमीटर दूर पहुंच चुका है और इसकी अल्टीट्यूड करीब 96 किलोमीटर तक हो गई है। और ये रॉकेट से अभी कुछ समय जब ये वातावरण को से दूर जाएगा तब इसका जो सुरक्षा कवच यानी कि ऊष्मा कवच है उसको मेन रॉकेट से पृथक कर लिया जाएगा। अब आगे आने वाला जो इवेंट है जो करीब 113 किलोमीटर की ऊंचाई पर हैपन होगा वो हीट शील्ड का सेपरेशन है। इस समय जैसा कि हमारे स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है हीट शील्ड सेपरेट हो गई है और रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने इसका घोषणा कर दी है और हम अपने स्क्रीन पर पृथक की हुई ऊष्मा कवच को भी देख सकते हैं। On your screens, the flight trajectory, the red line is the intended trajectory and the yellow line was the trajectory which the vehicle is following. The blinking dot is the current position of the vehicle. We are now into the burning phase of the second stage. The second stage is a liquid engine based on our famous Vikas engine, which has a peak thrust of about 800 kilonewtons. The second stage has a length of 12.8 meters
and it's loaded with liquid propellant Second stage performance normal. called US-25, and the oxidizer is the nitrogen tetroxide. The Plus stage 4 will burn for minutes. about 150 seconds. We are nearing the burnout of the stage, which will happen in about 20 seconds from now. इस 20 सेकंड के बाद में ये द्वितीय चरण का जो रॉकेट है जिसमें 41 टन लिक्विड प्रॉपेलेंट था उसका इंजन बंद कर दिया जाएगा और तृतीय चरण का रॉकेट जिसकी की लंबाई 3.6 Second stage मीटर है separated. और इसमें Third stage ignited. 7.65 टन सॉलिड प्रॉपेलेंट है। अभी ये उद्घोषणा की गई है कि तीसरा चरण का रॉकेट भी इग्नाइट हो गया है। अभी इसके जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे जो ब्लिंकिंग डॉट दिख रहा है और जो रेड डॉट है उसके ऊपर में बढ़ रहा है और इस समय हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी में करीब 4.23 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी अचीव कर चुका है और ये अपने गंतव्य की ओर बढ़ता जा रहा है। Third stage performance is nominal as declared by the Range Operations Director. The third stage has a total weight of 8.6 tons, out of which 7.6 tons Plus is 5 the propellant, which is STBP, AP, and aluminum-based composite propellant, as used in the first stage. Third stage performance normal. The material of the motor case is of composite nature, which results into significant payload savings. The motor case is about 2 meters of diameter and a length of 3.6 meters. It develops a peak thrust of 240 kilonewtons with a burn time of about 85 seconds and a specific impulse of 295 seconds. इस रॉकेट को कंट्रोल करने के लिए इसकी जो नोजल है ये फ्लेक्सी नोजल है। जितनी जरूरत पड़ती है कि रॉकेट को हमको वृत्ति कक्षा में ले जाना है उतना हाइड्रोलिक सिस्टम के द्वारा नोजल को मेन एक्सिस से थोड़ा चेंज किया जाता है। इस समय आप देख रहे होंगे ये एनिमेशन आपको दिखाया जा रहा है। इससे जो नोजल से निकलने वाला जो रॉकेट के गैसेस हैं वो रॉकेट को आगे बढ़ाती जा रही हैं और इस नोजल को हम अपनी कक्षा के अनुसार ऑनबोर्ड कंप्यूटर के सिस्टम के द्वारा हाइड्रोलिक सिस्टम द्वारा नोजल को हम उसी हिसाब से कमांड देते रहते हैं और ये उसकी तरफ आगे बढ़ता जाता है। इस समय हम करीब 6.7 किलोमीटर की रिलेटिव वेलोसिटी प्राप्त कर चुके हैं और we have reached the burnout of PS3 and now we get into a planned intentional coast of 180 seconds between PS3 and the separation of PS3 from the ongoing vehicle. This planned coast is an excellent feature of PSLV which gives mission designers the flexibility of achieving various kinds of orbits. Now, as we wait for the coasting period to get over, which will be of another 160 seconds, I want to mention to you about an important aspect of the launch clearance protocol for India missions. That is our collision avoidance studies with space objects already in orbits. Here, an analysis is done to assess the collision risk between already existing space objects and the upper stage of the launch vehicle and also the satellite once it is in orbit. Potential collisions, if any detected, are avoided by adjusting the time of launch within the specified window. We have delayed launch in some of our previous missions by 30 seconds to 2 minutes based on this analysis. Recent examples are PSLV-C42 and C43 missions. However, there is no such concern for this mission. This collision avoidance analysis is carried out as a standard practice for all our launches from Sriharikota. PS3 चरण के इंजन बंद होने के बाद में और चतुर्थ चरण के इंजन के शुरू होने के बीच में पूरा रॉकेट इसको जिसको हम कोस्टिंग फेज कहते हैं इसमें जो वेलोसिटी रॉकेट ने गेन कर ली है उसमें उसको कोई लॉस नहीं होता है क्योंकि वहां पर जो हवा के द्वारा जो घर्षण पैदा होता है वहां की उसकी मिनिमम यानी करीब करीब 0 घर्षण शक्ति है। इस समय अगर आप देखेंगे कि हमने जो रिलेटिव वेलोसिटी 6.7 किलोमीटर की प्राप्त की थी उसी वेलोसिटी से समय के अनुसार ये रॉकेट आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। इसीलिए हम ये कोस्टिंग फेज जितना लंबा रखेंगे उसी हिसाब से हम PSLV को विभिन्न भेजने के लिए यानी चंद्रमान या मार्स या एनी अदर और किसी ऑर्बिट में भेजने के लिए इस हम कोस्टिंग फेज का हम बहुत ही अच्छा उपयोग करते हैं। इस समय रॉकेट बढ़ रहा है और इसकी वेलोसिटी बहुत ही यानी कि किलोमीटर के दशमें यानी करीब 1 मीटर या 2 मीटर की थोड़ी सी रिलेटिव वेलोसिटी कम होती है। जैसे जैसे कि वो कम होती जाती है हम उसका इंतजार करते हैं और जैसे ही हमको जरूरत पड़ती है हम PS4
का इंजन जो है, PS4 का जो इंजन है उसमें 1.6 टन MMH और मान 3 को भरा गया है, और इस इंजन की लंबाई करीब करीब plus 3 9 मीटर minutes. है, और इसमें 2 नॉजल्स लगी हुई हैं जहाँ से दोनों को थ्रस्ट प्रोवाइड किया जाता है, और जिस तरह जैसे ही इंजन को हमको स्टीयरिंग करना होता है उसी हिसाब से हम इन नॉजल्स को हाइड्रोलिक सिस्टम के द्वारा फ्लेक्सी करके अपनी हम कक्षा की ओर लेके जाते हैं। इस समय आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पे जो ब्लिंक हो रहा है वो PS4 इग्निशन के एकदम पास दिख रहा है, Third और stage इस समय separated. प्रथम Third तृतीय स्टेज stage, को चतुर्थ स्टेज से पृथक कर दिया गया है। third और stage is separated, and in few seconds the fourth stage will ignite. इस समय Fourth चतुर्थ stage इंजन engine भी इग्नाइट started. हो गया है, और आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि चतुर्थ इंजन के जो दो इंजन हैं दोनों इग्नाइट हो गए हैं, और ROD ने, रेंज ऑप्शन डायरेक्टर ने इसका अनाउंसमेंट किया अभी। अब ये रॉकेट जो है PS4 के plus प्रणोदन के द्वारा आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, और जैसे ही ये अपने गंतव्य स्थान की तरफ पहुंचेगा इसके इंजन को शट ऑफ कर देंगे, और उसे कुछ क्षण के बाद में plus 10 minutes. RISAT-2B को हम पृथ्वी की कक्षा में Fourth stage प्रक्षेपित कर देंगे। performance normal. In about 4 minutes from now, the PS4 will be shut off after reaching the orbital conditions, and the flight charts which you have been seeing and or which are now on your screen, these flight charts are brought to you live by a network of our ground stations situated at various parts of the world along the track of this vehicle. The health and trajectory parameters are available from these ground stations via the antenna mounted on the rocket with all required subsystems. The information is sent to Sriharikota ground station in real time, and we are showing to you this information on your screen. As you can see, we have an altitude of 493 kilometers. The range from Sriharikota is 2,600 Fourth kilometers, stage performance and the normal. time elapsed is 650 seconds. Another about 250 seconds to go. And again, continuing with the coverage of our networks, we Plus maintain a 11 healthy minutes. overlap between the loss of signal by one station and acquisition of signal by the next ground station. The entire mission of C46 is tracked by the ground stations at Sriharikota, Thiruvananthapuram, Port Blair, and the ground station at Yataraga, Australia. There will be a small gap in visibility when the Port Blair station will lose the signals, and that is the vehicle will go out of the range of Port Blair station and before it is acquired by Yataraga station in Australia. The gap is approximately from 800 seconds flight time Fourth to stage 900 performance seconds flight normal. time. That is about of 95 seconds. And it is in the steady state burn period of the PS4. So there's no concern. And the data will be stored overboard. Onboard computers will relay the data back to the next visible ground station. इस समय हम करीब 525 12 किलोमीटर minutes. की अल्टीट्यूड पर हैं, और हमारी रिलेटिव वेलोसिटी 6.76 किलोमीटर पर सेकंड है, और हमको अपने गंतव्य को पहुंचने के लिए 558 किलोमीटर की अल्टीट्यूड चाहिए होगी, और उस समय इसकी वेलोसिटी करीब करीब 7.5 किलोमीटर पर सेकंड इसको अचीव कर रहा हो। अब ये जो चतुर्थ चरण का रॉकेट है जिसमें कि मॉन 3 और MMH के द्वारा दो ट्विन इंजन से इसका प्रणोदन चल रहा है, और इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। इस समय हम करीब 6.8 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी प्राप्त कर चुके हैं, और हमारी अल्टीट्यूड भी 537 किलोमीटर की हो गई है, और समय Fourth stage करीब performance 760 normal. सेकंड का बीत चुका है, और ये वेलोसिटी इसकी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जैसा कि अभी हमारे ROD ने इसका भी अनाउंस किया कि इससे निकलने वाला प्रणोद हमारे प्रिडिक्शन और के बराबर ही आ रहा है। अब हम करीब अपने गंतव्य की ओर पहुंच रहे हैं, और 13 minutes. 540 किलोमीटर का अल्टीट्यूड हमने अचीव कर लिया है, और हमको करीब और 558 किलोमीटर तक पहुंचना है, और ये जो ट्विन इंजन्स जो चतुर्थ चरण के हैं इनका प्रणोद प्रिडिक्शन के मुताबिक ही आगे बढ़ता जा रहा है। About 90 seconds more into the flight before PS4 is shut down by the guidance. And you can see, and you have seen the various stage separation events happening. And the Fourth stage PSLV performance employs a normal. variety of stage separation systems for this. The first stage separates from the launch vehicle using a flexible linear shaped charge based system, and the 8 retro rockets then impart the separation velocity to the separated first stage. The heat shield halves are separated by a linear bellow system explosive cord which is encased in a piston cylinder assembly. This is after a horizontal band separation
using bolt cutters. The moment band bolt cutter separation mechanism is used for the second stage, and 4 retros provide the jettisoning force. The third stage Plus separation 14 uses minutes. a ball release mechanism, and the Fourth springs stage give the performance required normal. separation velocity. The RISAT-2B separation is also spring based. We are approximately 30 seconds to the PS4 to the separation of the satellite. इस समय हम करीब 557 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पे पहुंच गए हैं, जबकि हमारा जो ध्येय है वो करीब 558 किलोमीटर पहुंचने का है, और रिलेटिव वेलोसिटी करीब 7.13 सेकंड की हो गई है, जो कि हमको 7.5 सेकंड की, इससे भी कुछ सेकंड के बाद ही हम अपने गंतव्य की तरफ पहुंचेंगे। और उस समय प्रथम Fourth stage चतुर्थन engine का shut जो off. इंजन है इस समय बंद कर Injection दिया गया है, conditions achieved. जैसा कि अभी हमारे आरओडी ने अनाउंस किया। अब से कुछ ही समय में ही हम सैटेलाइट का सेपरेशन भी देख पाएंगे। इस समय हमारी रिलेटिव वेलोसिटी करीब 7.18 किलोमीटर पर सेकंड है, और हमारा अल्टीट्यूड करीब 558 किलोमीटर है, जिसकी कक्षा में हमको छोड़ना है वो हमने अचीव कर लिया है। Plus We have 15 reached the minutes. orbital conditions, and we are waiting for the perfect alignment of the satellite into the orbit. Shortly, we will bring to you the live video footage of the satellite separation from our onboard cameras. And इस समय आप देखिए अपने स्क्रीन के ऊपर में जो हमारा ऑन बोर्ड का कैमरा लगा हुआ है, उस समय आपको दर्शा रहा है पृथ्वी का पीछे का जो हिस्सा है वो अपने रॉकेट से देख रहे हैं। और इस समय at the Separated. bottom, Satellite you can को- see the satellite also. Now you can see the satellite moving away. Mission See at the completed. bottom Over to mission of your director. screens, the satellite is moving away from the launcher after its injection into orbit. जो ऑन बोर्ड पे लगा हुआ हमारा कैमरा था वो इस समय दिखा रहा है कि सैटेलाइट और PS4 के बीच में जो दूरी बढ़ती जा रही है, और पीछे बैकग्राउंड में जो आपको एक दिख रहा है वो हमारी पृथ्वी की इमेज है। A beautiful view of the Earth in the background and the satellite moving away from the launcher after its injection into its orbit. We have achieved the precise orbital conditions of 557 kilometers circular. In fact, the apogee is 557.5 and perigee is 556.5. Inclination of 37 degrees is also achieved. The mission has been an outstanding success. Check 1 2 3. इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारे इसरो के चेयरमैन अपने सभी डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर के साथ में अभिनंदन करते हुए Chairman ISRO being greeted by senior scientists, and he in turn is congratulating the team of senior scientists, our center directors of various centers and various team leaders, the project director of PSLV, scientific secretary ISRO, all of them on your screens. And as they wish each other well and congratulate each other for this launch, we have many more launches of PSLV lined up in this year. And they will be of various missions supporting the satellite program of our country. इस समय हम अपने स्क्रीन पे चेयरमैन इसरो को देख रहे हैं। अब उनकी कोई वो घोषणा करने जा रहे हैं, उसका हम इंतजार करेंगे। उसके लिए हम लोग कुछ देर और इंतजार करेंगे। Chairman ISRO will address us shortly. We are awaiting for Dr. K. Shivan's address to all of us. Also, again, I want to reiterate that the mission has been a copybook flight, a textbook flight, as to say, and all the orbital conditions are achieved. The relative velocity of 7.2 or the inertial velocity of 7.6 kilometers per second. The vehicles presently is at a range of 5.38 kilometers from Sriharikota, and everything has been as per the plan. इस समय आप अपने स्क्रीन पे जो देख पा रहे हैं वो हमारे विभिन्न केंद्रों से आए हुए निदेशक, उपनिदेशक और किसी घोषणा का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। On your screen, on the extreme left of the screen is Sri S.R. Viju, the mission director of this mission, and behind him is Sri N.S. Srikanth, the vehicle director, extreme left corner on the back side. On the screen now, on
blue shirt looking at you is the director of URSC, URO Space Center. The clapping which you see is the confirmation of the signals from the satellite. This is what chairman was awaiting before he comes, and after another round of congratulatory wishes, he'll be shortly addressing us. जैसा कि अभी हम लोगों को बताया गया है कि सैटेलाइट से आने वाले संकेत हमारे मिशन कंट्रोल पर आ गए हैं, इससे एक और खुशी की लहर दौड़ गई है। अब इसी उद्घाटन करने के लिए हमारे ISRO के चेयरमैन श्री डॉक्टर शिवन साहब Dr. Shivan now greeting ex-chairman, his seniors, the earlier chairman, right now with Dr. Kasturi Rangan, then Shri S. Kiran Kumar, and now with Dr. Suresh, Chancellor of IAST. And now we leave from you. Goodbye. Please listen to the address of Dr. Shivan. My dear friends, I am extremely happy to announce that PSLV-C46 has successfully injected RISAT-2B precisely in the designated orbit of 555 km with inclination of 37 degrees. This particular mission for PSLV is a very, very important mission in the sense with this satellite launch, PSLV has crossed a landmark of lofting 50 tons to space. Comprises of 353 satellites is launched so far to the orbit, out of which 47 belongs to national satellite. The remaining satellite belongs to student satellite as well as foreign satellites. This PSLV, in addition to the RISAT-2B payload, main payload, is carried two important piggyback payload. That is, number one, indigenously developed, realized by the Vikram processor, realized by semiconductor lab. First time is flown as a piggyback mode for NGC system. Second piggyback payload is the low cost MEMS based INS. It is going to revolutionize our in the future launch vehicle missions. Regarding the satellite, the RISAT-2B is expand synthetic aperture radar, which is a advanced Earth observation satellite operating in spotlight mode, strip mode, as well as mosaic mode. In this satellite, another very, very important, very complex new technology has flown. That is the 3.6 meter unfurlable radial rib antenna. This is also going to be the future technology. Considering the efforts, the new developments, and the successful mission achievements, definitely the credit goes to Team ISRO, that is both launch vehicle team as well as satellite team. Let me compliment and congratulate each one of the team members for achieving such a wonderful success. At the same time, to achieve such type of missions with precisely, definitely the existing system in ISRO, that existing review system, excellent review system, at the same time, excellent quality system, and flawless hardware supplied by industry are really the backbone of this success. Let me also compliment and congratulate each one of them for achieving such type of wonderful mission. Now, having achieved the mission, what next? Definitely, the next mission is
going to be landmark mission for India. That is, Chandrayaan-2 mission is going to take place between July 9th and 16th of this year. After launching the satellite, we are expecting the landing on the moon on September 6th. This is the first mission we are going to plan. Subsequently, we are going to have very high resolution CARTO-3 satellite. Then, along with that, some couple of new developments are going to happen. That is the reusable launch vehicle demonstration. The second demonstration is going to happen in coming months. Then we are going to have a cute and excellent, cost-effective small satellite launch vehicle development mission also going to happen another few months from now. And similarly, we have so many other missions on hand. And as usual, I expect or I hope that and I request that all the team members of ISRO will rise to the occasion and meet the national goals successfully. And once again, I thank the team ISRO for achieving such a marvelous success. Thank you. Jai Hind. Congratulations to both PSLV and RISAT-2B for this wonderful mission, and congratulations to all the team members of the launch vehicle teams spread across all the centers, as well as the satellite team for achieving this mission flawlessly. This mission is very important for us, especially the satellite is a beautiful satellite with all the new technologies, and I'm sure this will be very useful to the users. And for PSLV, it's again yet another milestone of its successful journey. The PSLV-C46 has done its job very well. The orbit achieved is also precise with its altitude as well as inclination falling well within the specifications. It's also very important that we are flying certain piggyback inertial platforms and OBC systems. As already mentioned, that we have the new processor, which is going to be the workhorse processor for all our computers in the future, and the aided navigation system that is going to revolutionize the way in which we do low-cost launch vehicle realization in the future. So with this mission, we are getting ready for further PSLV launches. At least 3 of them are getting ready with it to be launched in a few months, and also getting ready with the GSLV Mar-3 Chandrayaan mission and its next M2 mission of GSLV Mar-3. We are also getting ready for GSLV F10 and F12 missions, which is going to launch very important satellites. So once again, let me congratulate the entire team, ISRO, spread across all the launch vehicle centers for making this launch vehicle and satellite so well and achieving this successful mission. And want to congratulate our partners in industries for making huge number of hardwares for this launch vehicle and satellite, and the readiness they are showing to build more number of launch vehicles in the coming years. From the earlier rate of launches, we are really doubling it, and both ISRO and the industries are equipping themselves to take up this challenge, and we are sure going to demonstrate it. Thank you once again. Good morning, all of you. It is yet another testimony to ISRO's dedicated effort and commitment effort towards accomplishing outstanding missions. Today's mission is very important, and incidentally, it's a 48th mission of PSLV, injecting RISAT-2B to be a member of 48th orbiting satellite, Indian satellite in the orbit. So congratulations to the entire ISRO team, and ISRO has been a practice and made a habit of making successful missions. Coming to the satellite, this has been a much awaited satellite with complex new technologies, X-band SHAR, and one of the most cutting edge technology in the world, if you say one of its world class, the 3.6 meter radial rib antenna. I know the
efforts which have gone in the development and demonstration of such a cutting-edge technology, and congratulations specifically to this team. The payload is very complex. A number of new subsystems had to be developed for this satellite, and the satellite was realized in a record time. As it was already highlighted, this was made amidst a number of multiple satellites in the pipeline. More than 10 satellites are in the pipeline at various stages at ISRO Satellite Center. And let me congratulate and compliment all the centers involved in making this wonderful achievement today. So let me congratulate once again and thank you all. Good morning to all. I'm extremely happy, in fact, very happy and very privileged to stand here and address all of you after this wonderful mission of PSLV-C46, injecting RISAT-2B into the precise orbit as targeted. In fact, yesterday when I was sitting in LCC, many people asked me whether your speech is ready to make the speech after the launch. In fact, today morning also 1 or 2 persons asked me. What I gather from that is the confidence each and everyone has got on this PSLV vehicle. There are no worries, there are no concerns for anybody who have gone through this PSLV launch vehicle technology. I take this opportunity to express my sincere gratitude to all people who have contributed, especially my seniors and mentors, most of people who are available here, who continuously guide us and continuously mentor us without any reservation. I express my sincere gratitude to all my seniors here. I also take this opportunity to thank each and every former project director as well as people who have been associated with PSLV mission, from whom we have inherited this legacy, this rich legacy of launch vehicle technology. Especially my immediate predecessor, Sri R. Hutton, former project director, and Sri A.G. Radhakrishnan sir, former vehicle director, from whom I have directly taken over and having given me such a wonderful vehicle and a wonderful project and a project team to lead. I have my associate project director, Sri N.S. Srikanth, and my another associate project director, Sri M.J. Lal, who are the vehicle director and associate vehicle director, who often take the total load as well as the brunt of the launch campaign activities. I express my sincere gratitude to my associate project directors here. All my system development agencies and all entities, including Space Transportation System and the Systems Reliability Entity, spread over all centers, have contributed immensely for this mission. I express my gratitude to all my system development agencies, entities, and systems reliability agencies. As our Chairman ISRO has just mentioned, we have an excellent review mechanism in ISRO, comprising of different review forums where we discuss our design related as well as our testing related changes as well as observations. And we take all actions from these committees and see that all actions are getting closed and resulting in a very clean system which is now available here as we have seen. I express my sincere gratitude to all the review forums, especially flight readiness review forums and mission readiness review committees, through which we get a very clean system on board. Then I take this opportunity to express my sincere gratitude to Chairman ISRO for having given us this opportunity to launch this mission, who continuously guides us. Often, every week, I think he calls me and asks what is the status, and whenever I give him positive status, he is extremely happy and he will say immediately, very good, very good. That motivates us a lot, sir. Thank you very much. All center directors and directors of ISRO centers, especially Director IPRC, Director URSC, Director SDSC, and Director LPSC, all continuously interacts with me and gives us a lot of guidance and support. Thank you all. Director VSSC deserves a special mention because he interacts with us on a daily basis, almost on an hourly basis, guiding us, giving us good suggestions, good solutions, and often holding our hands whenever we feel we will be falling down. Without his guidance, without his support, definitely this would not have been possible and I would not have been standing here. Thank you very much, sir. Finally, before concluding, I would like to extend my compliments as well as my best wishes for my satellite team, that is RISAT-2B team, for a wonderful mission for years and years to come. Thank you very much, sir. Thank you all.
Respected Chairman ISRO, Center Directors, Senior Mentors, dear colleagues, very warm good morning to all of you. First, let me compliment, congratulate, and salute Team ISRO for this wonderful achievement of PSLV-C46 RISAT-2B mission. This PSLV not only launched 353 satellites, it acted as a very, very powerful platform to demonstrate various technologies. In fact, in this particular mission also, we have demonstrated a couple of technologies which will be useful for all our future missions. This particular mission, this satellite team realized the spacecraft within the shortest time period possible, and we could be able to launch with the least countdown time of 25 hours. This shows the Team ISRO's maturity in handling the rocket technology. Coming to the Satish Dhawan Space Centre, we could be able to deliver the all solid motors within the shortest span of time and handle the liquid propulsion system, acquire liquid propulsion system in very, very efficient way, which will lead to very safe operations, which reduces the overall schedule. Coming to vehicle integration and assembly, the maturity it attained over years helped us to ensure flawless integrations, and we have got excellent team of tracking and telemetry which ensures safe operations. Over and above, our system reliability and robust review mechanism help us to make sure that we are always flying with the safe, flawless systems, which ensures 100% performance. Soon, Satish Dhawan Space Centre will be doubling the solid motor production and triple the integration facilities. Soon, Team ISRO and whole nation will be celebrating the Chandrayaan mission and many more missions to come. At this juncture, let me appreciate and acknowledge contribution made by our senior mentors, family members, and industrial partners. With this, let me wish you all the best. Thank you. Good morning. Hearty congratulations to Team ISRO. This is a wonderful mission. It gives us another platform for microwave remote sensing for Earth observations. The payload is a very complex payload. It has 108 subsystems, and I am happy to say all these subsystems are made in-house or through our Indian industry. I take this opportunity to congratulate all the people who developed this payload because of their tireless efforts and strong determination. I also congratulate each and every member of ISRO and wish you all the best for our future endeavors. Thank you. Heartiest congratulations to each and every one of you. It is yet another important day for ISRO. The PSLV-C46 has successfully injected the technology-intensive and complex, very shortly realized RISAT-2B in the right orbit. This success is due to the dedicated, sincere hard work of Team ISRO along with the industrial partners. And today we have seen the vehicle performance is so excellent. All the systems have worked very well. On this occasion, on behalf of the Liquid Propulsion System Center, let me congratulate, compliment, salute all the team members, our family members, industrial partners, and our mentors for guiding us. On this occasion, I want to say, with IPRC team, the Liquid Propulsion System Center is equipped and geared up to meet all the requirements of ISRO, all the missions of ISRO. Once again, let me thank each and every one of you for the excellent work done. Thank you. Jai Hind.
respected Chairman ISRO, Center Directors, illustrious leaders of ISRO whose blessings are always with us, high-level dignitaries who witnessed the flawless liftoff of PSLV-C46 RISAT-2B liftoff and subsequent injection of the spacecraft in the precise orbit and subsequent solar panel deployments, my senior colleagues, and my dearest RISAT-2B team members who have realized the spacecraft in a record time of 15 months and with their highest level of commitment, dedication. Everyone has given their best, and I thank PSLV and PSLV team for injecting RISAT-2B in a precise orbit. Well begun is half done, and RISAT-2B has started its journey in the orbit, and it is going to perform, and it is going to change the way we do remote sensing and put it to use for disaster management and national development. RISAT-2B spacecraft comprises of bus module, payload module, and on top of the payload module, a highly complex and technologically excellent 3.6 meter deployable radial rib antenna, which was also developed in a record time. And payload has a lot of complex technologies. High power transmission, that is 2 kilowatts of pulsed power, was derived from SSPAs with 8 SSPAs combined power with a Butler matrix, high power circulator switch, and a host of complex technologies. And similarly, the bus system was there to support this agility requirement and the mission requirements. My salutations and gratitude to my dearest RISAT-2B team. Each one of them have given their best and contributed to realize this mission in a record time of 15 months, which any other best industry also would have taken not less than 4 years to realize this mission. I thank the management of ISRO for giving me this opportunity to lead the team and contribute my best. Thank you, sir. Thank you very much. Respected Chairman ISRO and my dear colleagues ISRO, good morning to all of you. It is yet another textbook launch by PSLV-C46 and RISAT-2B mission. The satellite was injected exactly their 557 kilometer orbit. Performance of PS2 and PS4 stages are normal. In addition to the injection of the main satellite, the piggyback test systems also performed very well. The Vikram is going to be used in near future as a main processor for the controlling the launch vehicles. Sir, as you list out the coming launches, IPRC team is geared up to deliver the stages in time. We already fixed the PS2 and PS4 stages. PS4 stages on 23rd and PS2 stages on 27th. We are going to deliver to the project. And upcoming projects also, IPRC is geared up. At these junctures, let me congratulate and compliment all ISRO teams, particularly IPRC team, and our industry partners who is participating with our test facilities build-up. I must congratulate and compliment. Thank you very much. Jai Hind. Good morning, everybody. Let me once again congratulate the team ISRO for this very excellent performance of PSLV and injecting into the precise orbit. For this navigation and inertial system community, this flight is more interesting as well as challenging because we had 3 navigation systems were flying, one in the main as well as 2 systems in piggyback mode. As mentioned, the ACL realized, our own design and realized processor is being validated and the performance had been excellent. And another very major milestone is actually the challenge thrown on us to develop low cost, low mass,
high precision navigation system. So I should thank our chairman, because I remember one of the reviews in SHAR only, he posed this challenge to us, and I posed this to my team, and the team had come out with a wonderful, innovative solution of using very, very low cost MEMS gyroscopes and achieving. Today, what we have seen is the identical performance of high precision has been achieved with the piggyback navigation system also. So let me congratulate my team at IISU, as well as those who have all played part in realizing this in a very short time. So the challenge ahead is, the challenges are more in the coming days, and we assure you, sir, that with the best of our ability, all this activity will be completed. Once again, in RISAT-2B also, within a short duration, we could develop an actuator, 1 Newton meter actuator, to increase the agility of the spacecraft. So I wish the spacecraft team also all the success in all the mission operations in the days to come. Thank you once again, all my colleagues in ISRO, as well as the industry partners and our mentors. Thank you. My dear friends, definitely this the performance of the mission is fantastic, and in terms of altitude, that we got the orbit within 3 kilometer difference, that targeted orbit. With the inclination target, it is within almost zero, that is 0.002 degree. It's such a precise mission we had. Also, the missions, the piggyback also exactly performed as the main payload. That means we have full confidence on the low-cost INS system, whatever we have flown. In next 5 years, this satellite, it is going to do the excellent services in the all-weather conditions, and I'm sure that it will be useful for the users to the maximum. And as I mentioned, my dear friends, next mission is the most complex mission ISRO has ever undertaken. That is Chandrayaan-2 mission. It is not only launch mission, and we are going to land precisely at a place where nobody else has gone. This is a challenging for the whole ISRO team, and I'm sure, I don't have any doubt that the team ISRO will achieve the target or the mission the precision, whatever we are aiming for. So once again, I am thanking the team ISRO for standing, rising to the occasion, and at the same time achieving the missions as we demand. Thank you, Jai Hind. Let us see after during the Chandrayaan-2 mission. Thank you. Thank you very much. Launch, and the excitement of the launch slowly building up here. Just a minute to go for the launch. इस समय हम 1 मिनट दूर हैं, जिसको कि हम T-1 मिनट कहते हैं. उस समय रॉकेट का प्रज्वलन होगा, और फिर ये रॉकेट के प्रज्वलन के द्वारा 230 टन और 44.4 मीटर ऊंचाई वाला रॉकेट धीमे धीमे अपने गंतव्य की ओर बढ़ेगा. इस समय हम 45 सेकंड दूर हैं. अगर आप ध्यान से देखते रहिए टीवी स्क्रीन के ऊपर में कि 0 से 2.8 सेकंड पहले 2 RCT रॉकेट प्रज्वलित किए जाएंगे, जिनके कंफर्म होने के बाद ही प्रथम चरण को प्रज्वलित किया जाएगा. इस समय हम 30 सेकंड दूर हैं अपने T0 से.
minus 25 और seconds, हमारा प्रोग्रामर बराबर काउंटडाउन देते जा रहे हैं। इस समय हम minus 20 20 सेकंड दूर seconds, हैं। minus 15 Just seconds, sit back and see the launch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. इस समय रॉकेट प्रज्वलित हो गया है और अपने गंतव्य की ओर धीमे धीमे उठ रहा है। इस Plus रॉकेट 5 की seconds. 230 टन वजन वाला यह रॉकेट अपने गंतव्य की ओर जा रहा है। A perfect liftoff from the launch pad. On your screens, the early morning launch gives you a beautiful view of the flame of the exhaust of PS1 climbing into the atmosphere slowly, steadily on towards its path, towards its final orbit. इस समय हमारे स्क्रीन पे जो फ्लाइट पैरामीटर्स दिखाए जा रहे हैं, जो प्रेडिक्शन किया गया है और जो एक्चुअल आ रहे हैं, वो एक दूसरे के ऊपर ही चल रहे हैं। Can you hear the roar? Can you hear the roar of the vehicle? इस समय रॉकेट से निकलने वाली जो आवाज है, उस समय वायुमंडल को गुंजित कर रही है और जो लोग बाहर से देख रहे होंगे, आपको भी वो आवाज आपके टीवी स्क्रीन पर आ रही होगी। और हम इस समय 1 मिनट के आसपास पहुंच रहे हैं। Plus 1 minute. PS1 thrusting with its full power. This stage is about 20 meters in height, and PS1 has developed a peak thrust of 4,800 kilonewtons. This will burn for about 105 seconds, and it has a specific impulse of 270 seconds. The stage burns out at the altitude of 52 kilometers. We are now at the altitude of 27 kilometers. इस समय हम 1 मिनट और करीब 30 सेकंड तक चल चुके हैं और ये प्रथम चरण का जो रॉकेट से निकलने वाला प्रणोद, इसको धीमे धीमे ऊपर की ओर लेते जा रहा है और इसकी गति बढ़ती चली जा रही है। इस रॉकेट का प्रचलन करीब करीब 110 सेकंड तक रहता है। अब हम लोग करीब 90 सेकंड से You will see ऊपर। the burnout of PS1 shortly. You can see the PS1 has burnt out, and the इस ignition समय of आप देख its सकते हैं वीडियो में आपका PS1 और PS2 का पृथक हो गया है और a beautiful view of the separated bodies. You can Plus see 2 the minutes. first stage falling away and the second stage ignited and moving forward. आपके स्क्रीन पे इस समय 2 डॉट दिख रहे हैं, जिसमें कि एक फॉरवर्ड रॉकेट जो कि सेकंड स्टेज पे जा रहा है और जो कि प्रथम चरण का रॉकेट का इंजन एकदम नोजल एकदम रेड हॉट हो जाता है, इसलिए आप 2 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट देख रहे थे। और सेकंड स्टेज का से निकलने वाला प्रणोद इस रॉकेट को और अपने गंतव्य की ओर लेता जा रहा है और इसकी वेलोसिटी समय के अनुसार बढ़ती जा रही है। इस समय इसकी वेलोसिटी करीब 1.66 किलोमीटर पर सेकंड है और ये करीब 80 किलोमीटर दूर पहुंच चुका है और इसकी अल्टीट्यूड करीब 96 किलोमीटर तक हो गई है। और ये रॉकेट से अभी कुछ समय जब ये वातावरण को से दूर जाएगा, तब इसका जो सुरक्षा कवच यानी कि ऊष्मा कवच है, उसको मेन रॉकेट से पृथक कर लिया जाएगा। अब आगे आने वाला जो इवेंट है, जो करीब 113 किलोमीटर की ऊंचाई पर हैपन होगा, वो हीट शील्ड का सेपरेशन है। इस समय जैसा कि हमारे स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, हीट शील्ड सेपरेट हो गई है और रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने इसका घोषणा कर दी है और हम अपने स्क्रीन पर पृथक की हुई ऊष्मा कवच को भी देख सकते हैं। On your screens, stage the performance flight normal. trajectory, the red line is the intended trajectory and the yellow line was the trajectory which the vehicle is following. The blinking dot is the current position of the vehicle. We are now into the burning phase of the second stage. The second stage is a liquid engine based on our famous Vikas engine, which has a peak thrust of about 800 kilonewtons. The second stage has a length of 12.8 meters, and it's loaded with liquid propellant Second stage performance normal. called US-25, and the oxidizer is the nitrogen tetroxide. The Plus stage 4 will burn minutes. for about 150 seconds. We are nearing the burnout of the stage, which will happen in about 20 seconds from now. इस 20 सेकंड के बाद में ये द्वितीय चरण का जो रॉकेट है, जिसमें 41 टन लिक्विड प्रॉपेलेंट था, उसका इंजन बंद कर दिया जाएगा और तृतीय चरण का रॉकेट, जिसकी की लंबाई 3.6 मीटर है और इसमें 7.65 टन सॉलिड प्रॉपेलेंट है, अभी घोषणा की गई है कि तीसरा चरण का रॉकेट भी इग्नाइट हो गया है। अभी इसके
जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जो ब्लिंकिंग डॉट दिख रहा है और जो रेड डॉट है उसके ऊपर में बढ़ रहा है, और इस समय हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी Third में stage करीब performance normal. 4.23 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी अचीव कर चुका है और ये अपने गंतव्य की ओर बढ़ता जा रहा है। Third stage performance is nominal as declared by the Range Operations Director. The third stage has a total weight of 8.6 tons, out of which 7.6 tons Plus is the 5 propellant, minutes. which is STVP, AP, and aluminum-based composite propellant as used in the first stage. Third stage performance normal. The material of the motor case is of composite nature, which results into significant payload savings. The motor case is about 2 meters of diameter and a length of 3.6 meters. It develops a peak thrust of 240 kilonewtons with a burn time of about 85 seconds and a specific impulse of 295 seconds. इस रॉकेट को कंट्रोल करने के लिए इसकी जो नोजल है ये फ्लेक्सी नोजल है। जितनी ज़रूरत पड़ती है कि रॉकेट को हमको वृत्ति कक्षा में ले जाना है, उतना हाइड्रोलिक सिस्टम के द्वारा नोजल को मेन एक्सिस से थोड़ा चेंज किया जाता है। इस समय आप देख रहे होंगे ये एनिमेशन आपको दिखाया जा रहा है। Third stage इससे जो performance normal. नोजल से निकलने वाला जो रॉकेट के गैसेस हैं वो रॉकेट को आगे बढ़ाती जा रही हैं, और इस नोजल को हम अपनी कक्षा के अनुसार ऑनबोर्ड कंप्यूटर के सिस्टम के द्वारा, हाइड्रोलिक सिस्टम द्वारा नोजल को हम उसी हिसाब से कमांड देते रहते हैं और ये उसकी तरफ आगे बढ़ता जाता है। इस समय हम करीब 6.7 किलोमीटर की रिलेटिव वेलोसिटी प्राप्त कर चुके हैं और we have reached the burnout of PS3 Vehicle in and now coasting phase. we get into a planned intentional coast of 180 seconds between PS3 and the separation of PS3 from the ongoing vehicle. This planned coast is an excellent feature of PSLV, which gives mission designers the flexibility of achieving various kinds of orbits. Now, as we wait for the coasting period to get over, which will be Vehicle of combined another coasting 160 normal. seconds, I want to mention to you about an important aspect of the launch clearance protocol for ISRO missions. Plus That is our 7 collision minutes. avoidance studies with space objects already in orbits. Here, an analysis is done to assess the collision risk between already existing space objects and the upper stage of the launch vehicle, and also the satellite once it is in orbit. Potential collisions, if any detected, are avoided by adjusting the time of launch within the specified window. We have delayed launch in some of our previous missions by 30 seconds to 2 minutes based on this analysis. Recent examples are Vehicle combined coasting PSLV-C42 normal. and C43 missions. However, there is no such concern for this mission. This collision avoidance analysis is carried out as a standard practice for all our launches from Sriharikota. PS3 चरण के इंजन बंद होने के बाद में और चतुर्थ चरण के इंजन के शुरू होने के बीच में पूरा रॉकेट, इसको जो हम कोस्टिंग फेज कहते हैं, इसमें जो वेलोसिटी रॉकेट ने गेन कर ली है उसमें उसको कोई लॉस नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर जो हवा के द्वारा जो घर्षण पैदा होता है वहाँ की उसकी मिनिमम यानी करीब करीब 0 घर्षण शक्ति है। इस समय अगर आप देखेंगे कि हमने जो रिलेटिव वेलोसिटी 6.7 किलोमीटर की प्राप्त की थी, उसी वेलोसिटी से समय के अनुसार ये रॉकेट आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। इसीलिए हम ये कोस्टिंग फेज जितना लंबा रखेंगे उसी हिसाब से हम PSLV को विभिन्न भेजने के लिए, यानी चंद्रमा या मार्स या एनी अदर और किसी ऑर्बिट में भेजने के लिए इस हम कोस्टिंग फेज का हम बहुत ही अच्छा उपयोग करते हैं। इस समय जो रॉकेट बढ़ रहा है और उसकी वेलोसिटी बहुत ही यानी कि किलोमीटर के दशमें यानी करीब 1 मीटर या 2 मीटर की थोड़ी सी रिलेटिव वेलोसिटी कम होती है। जैसे जैसे कि वो कम होती जाती है हम उसका इंतजार करते हैं और जैसे ही हमको जरूरत पड़ती है हम PS4 का इंजन जो है, PS4 का जो इंजन है उसमें 1.6 टन MMH और मान 3 को भरा गया है और इस इंजन की लंबाई करीब करीब 3 मीटर है और इसमें 2 नॉजल्स लगी हुई हैं जहाँ से दोनों को थ्रस्ट प्रोवाइड किया जाता है, और जिस तरह जैसे इंजन को हमको स्टीयरिंग करना होता है उसी हिसाब से हम इन नॉजल्स को हाइड्रोलिक सिस्टम के द्वारा फ्लेक्सी करके अपनी हम कक्षा की ओर लेके जाते हैं। इस समय आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पे जो ब्लिंक हो रहा है वो PS4 ignition एकदम पास दिख रहा है और इस समय प्रथम तृतीय स्टेज को चतुर्थ स्टेज से पृथक कर दिया गया है। Third stage is separated and in few seconds the fourth stage will ignite.
इस समय चतुर्थ इंजन भी इग्नाइट हो गया है और आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि चतुर्थ इंजन के जो दो इंजन हैं दोनों इग्नाइट हो गए हैं और आरओडी ने, रेंज ऑप्शन डायरेक्टर ने इसका अनाउंसमेंट किया अभी। अब ये रॉकेट जो है PS4 के प्रणोदन के द्वारा आगे की ओर बढ़ता जा रहा है और जैसे ही ये अपने गंतव्य स्थान की तरफ पहुंचेगा इसके इंजन को शट ऑफ कर देंगे और उसे कुछ क्षण के बाद में RISAT-2B को हम पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित कर देंगे। In about 4 minutes from now, the PS4 will be shut off after reaching the orbital conditions, and the flight charts which you have been seeing and or which are now on your screen, these flight charts are brought to you live by a network of our ground stations situated at various parts of the world along the track of this vehicle. The health and trajectory parameters are available from these ground stations via the antenna mounted on the rocket with all required subsystems. The information is sent to Sriharikota ground station in real time, and we are showing to you this information on your screen. As you can see, we have an altitude of 493 kilometers. The range from Sriharikota is 2,600 kilometers, and the time elapsed is 650 seconds. Another about 250 seconds to go. And again, continuing with the coverage of our networks, we maintain a healthy overlap between the loss of signal by one station and acquisition of signal by the next ground station. The entire mission of C46 is tracked by the ground stations at Sriharikota, Thiruvananthapuram, Port Blair, and the ground station at Yataraga, Australia. There will be a small gap in visibility when the Port Blair station will lose the signals. And that is, the vehicle will go out of the range of Port Blair station and before it is acquired by Yataraga station in Australia. The gap is approximately from 800 seconds flight time to 900 seconds flight time. That is about of 95 seconds. And it is in the steady state burn period of the PS4. So there's no concern. And the data will be stored overboard. Onboard computers will relay the data back to the next visible ground station. इस समय हम करीब 525 किलोमीटर की अल्टीट्यूड पर हैं और हमारी रिलेटिव वेलोसिटी 6.76 किलोमीटर पर सेकंड है और हमको अपने गंतव्य को पहुंचने के लिए 558 किलोमीटर की अल्टीट्यूड चाहिए होगी और उस समय इसकी वेलोसिटी करीब 7.5 किलोमीटर पर सेकंड इसको अचीव कर रहा हो। अब ये जो चतुर्थ चरण का रॉकेट है जिसमें कि मॉन 3 और MMH के द्वारा दो ट्विन इंजन से इसका प्रणोदन चल रहा है और इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। इस समय हम करीब 6.8 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी प्राप्त कर चुके हैं और हमारी अल्टीट्यूड भी 537 किलोमीटर की हो गई है और समय करीब 760 सेकंड का बीत चुका है और ये वेलोसिटी इसकी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जैसा कि अभी हमारे आरओडी ने इसका भी अनाउंस किया कि इससे निकलने वाला प्रणोद हमारे प्रेडिक्शन और के बराबर ही आ रहा है। अब हम करीब अपने गंतव्य की ओर पहुंच रहे हैं और 540 किलोमीटर का अल्टीट्यूड हमने अचीव कर लिया है और हमको करीब और 558 किलोमीटर तक पहुंचना है और ये जो ट्विन इंजन्स जो चतुर्थ चरण के हैं इनका प्रणोद प्रेडिक्शन के मुताबिक ही आगे बढ़ता जा रहा है। About 90 seconds more into the flight before PS4 is shut down by the guidance, and you can see and you have seen the various stage separation events happening. And the PSLV employs a variety of stage separation systems for this. The first stage separates from the launch vehicle using a flexible linear shaped charge-based system, and the 8 retro rockets then impart the separation velocity to the separated first stage. The heat shield halves are separated by a linear bellow system explosive cord, which is encased in a piston cylinder assembly. This is after a horizontal band separation using bolt cutters. The moment band bolt cutter separation mechanism is used for the second stage, and 4 retros provide the jettisoning force. The third stage separation uses a ball release mechanism, and the springs give the required separation velocity. The RISAT-2B separation is also spring-based. We are approximately 30 seconds to the PS4 to the separation of the satellite. इस समय हम करीब 557 किलोमीटर की अल्टीट्यूड पे पहुंच गए हैं जबकि हमारा जो ध्येय है वो करीब 558 किलोमीटर पहुंचने का है और
रिलेटिव वेलोसिटी करीब 7.13 सेकंड की हो गई है, जो कि हमको 7.5 सेकंड की, इससे भी कुछ सेकंड के बाद ही हम अपने गंतव्य की तरफ पहुंचेंगे। और उस समय प्रथम चतुर्थचरण का जो इंजन है इस समय बंद कर दिया गया है, जैसा कि अभी हमारे आरओडी ने अनाउंस किया। अब से कुछ ही समय में ही हम सैटेलाइट का सेपरेशन भी देख पाएंगे। इस समय हमारी रिलेटिव वेलोसिटी करीब 7.18 किलोमीटर पर सेकंड है और हमारा अल्टीट्यूड करीब 558 किलोमीटर है, जिसकी कक्षा में हमको छोड़ना है वो हमने अचीव कर लिया है। We have reached the orbital conditions and we are waiting for the perfect alignment of the satellite into the orbit. Shortly we will bring to you the live video footage of the satellite separation from our onboard cameras. And इस समय आप देखिए अपने स्क्रीन के ऊपर में जो हमारा ऑनबोर्ड का कैमरा लगा हुआ है, उस समय आपको दर्शा रहा है पृथ्वी का पीछे का जो हिस्सा है वो अपने रॉकेट से देख रहे हैं। और इस समय सैटेलाइट को see the satellite also. Now you can see the satellite moving away. See at the bottom of your screens, the satellite is moving away from the launcher after its injection into orbit. जो ऑन बोर्ड पे लगा हुआ हमारा कैमरा था वो इस समय दिखा रहा है कि सैटेलाइट और PS4 के बीच में जो दूरी बढ़ती जा रही है, और पीछे बैकग्राउंड में जो आपको एक दिख रहा है वो हमारी पृथ्वी की इमेज है। A beautiful view of the Earth in the background and the satellite moving away from the launcher after its injection into its orbit. We have achieved the precise orbital conditions of 557 kilometers circular. In fact, the apogee is 557.5 and perigee is 556.5. Inclination of 37 degrees is also achieved. The mission has been an outstanding success. Check 1, 2, 3. इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारे इसरो के